first gift is from my children, actually. My children are big now. They are 19, but they have made a gift for Rafiq, which I would like him to open now, if that's okay with you. Slow is best. Slow is best. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here this evening with you all. दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़िशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फॉरएवर फ्रेंडशिप वेल्डन बैंक्वेट हॉल में आपने रखा है, माड़ा में, मालवनी गेट नंबर 1। ये फॉरएवर फ्रेंडशिप डे आपने जो रखा है, इसका क्या मकसद है, क्या रीज़न है? जो मेरे राइट साइड में बैठे मिस्टर बेन माश, एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू आज से लगभग 10 साल पहले, एग्जैक्टली लगभग नहीं, इनकी मुझसे मुलाकात हुई थी। और उस दिन से लेकर अब तक लगभग हर साल, मतलब सिर्फ पैंडेमिक का जो साल है उसको छोड़कर, बेन माश मुंबई में आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मिलने, होली मदर के बच्चों से मिलने और जो मॉम स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए उनके स्कूलों से मिलने। उनका और कोई यहाँ पे बिज़नेस इंटरेस्ट नहीं है, कोई फैमिली रिलेशंस नहीं है। तो हम ये चाह रहे थे, उनकी वाइफ जो है एम्मा मार्श, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आज के दौर में जब घरेलू रिश्ते ही मतलब सालों तक नहीं निभा पाते हैं लोग, तो एक ऐसा बंदा जिसका कंट्री अलग है, कल्चर अलग है, कॉन्टिनेंट अलग है और सारा कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, मतलब कोई कनेक्शंस नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग है, तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सर के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सर का प्रोफेशन क्या है और आपकी फर्स्ट मुलाकात कैसी थी, इसके बारे में। जी, तो सर एक्चुअली बेसिकली एक ग्लोबल टीचर हैं। ये भी मेरी तरह ग्लोबल तो नहीं है, लेकिन ग्लोबल टीचर है। मैं नहीं हूँ ग्लोबल टीचर, और अभी बाय प्रोफेशन उन्होंने लॉ भी किया हुआ है, मतलब सॉलिसिटर हैं ये। तो एक स्कूल में ये पढ़ाते थे जहाँ पे एक बंदे थे मिस्टर राजेश, तो उनका मेरा गूंज के थ्रू कनेक्शन हुआ। वो स्कूल की विज़िट पे आए पहली बार, मुझसे मुलाकात किया, उनको होली मदर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। तो जब वापस गए तो उनकी बेटियाँ इनके स्कूल में पढ़ती थी, तो उन्होंने डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा, मैं मुंबई सिटी में गया था, हमारा एक ऐसा स्कूल है। तो इनको बहुत इंटरेस्ट हुआ कि ये चाहते हैं कि मतलब पूरी दुनिया में जाएँ, लोगों से मिलें। तो नेक्स्ट विजिट में ये आए थे मुझसे मिलने के लिए, और वो आज ही का दिन था, एग्जैक्टली 10 साल पहले। सर, आपकी फ्रेंडशिप एक फॉरेनर सर के साथ है और लोकल में भी आपके बहुत से अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तो आप किस तरह से इस दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, फॉरेनर और लोकल? आई थिंक ऐसा मेरा मानना है कि हम अपने रिश्तेदार को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, अपने नेबर्स को हम पिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में सबसे बेहतर जो आपको ऑप्शन मिलता है वो दोस्तों को पिक करने का है। यू कैन चूज़ योर फ्रेंड्स। और दोस्ती एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर एज, कास्ट, कल्चर, कॉन्टिनेंट कोई भी बैरियर नहीं होता है। खाली आपका माइंडसेट सेम होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस सेम होना चाहिए, तो दोस्ती हो जाती है। तो बेन के साथ में भी लगभग ऐसा ही था। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी ज़िंदगी में मतलब जो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, उसमें दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। जैसा मुझे ये लाइन में लाने वाला मेरा बचपन का दोस्त मिस्टर अजीज़ शेख, वो उनका हेल्थ रीज़न है, वो नहीं आ पाए हैं, तो वो मुझे ड्रैग करके लेके आए इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर। तो मैं पता नहीं दूसरी जगह पे क्या कर पा रहा होता। एक और दोस्त बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं उधर, श्रीनिवासन जी है। जब हम स्कूल स्टार्ट किए और बहुत स्ट्रगल कर रहे थे हमारी स्टोरी को मोहल्ले तक में पहुंचाने के लिए, तो TV 9 में उन्होंने हमारी स्टोरी को पहुंचाया, मतलब, और बहुत सारे लोगों को पता चला कि कोई होली मदर नाम का भी कोई स्कूल है और वो कॉन्सेप्ट है। तो दोस्ती ने मुझे उन जगहों पर लेके गया है जहाँ का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था। तो हर डे कोई ना कोई डे होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, मदर डे होता है, टीचर डे होता है। फॉरएवर फ्रेंडशिप डे आज आपने बनाया है, तो ये हर साल आप बनाएंगे? तो ये एक्चुअली एक वर्ड मैंने कॉइन किया था, फॉरएवर फ्रेंड्स, कि दोस्ती की कोई उम्र नहीं होनी चाहिए, दोस्ती के अंदर कोई मतलब इंटरवल नहीं होना चाहिए। तो पैंडेमिक के अंदर भी हम एक दूसरे के साथ में बहुत कंसर्न रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि पैंडेमिक को जो लोग बाहर निकल कर आए हैं, वो जिनके पास पैसा था वो पैसों से बाहर निकल कर आए, लेकिन जिनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, जिनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, वो लोगों ने पैंडेमिक को बहुत अच्छे से फेस किया, अपने लेवल पे भी और समाज के लेवल पे भी बहुत अच्छे से फेस किया उन्होंने।
मिस्टर बैन से हम बात करना चाहेंगे. सर, हाउ वाज योर फर्स्ट मीटिंग विद प्रिंसिपल रफीक सर? कैन यू डिस्क्राइब प्लीज? Yes, I remember it very clearly, meeting Rafiq Sir for the first time 10 years ago this day, and I remember being amazed by his passion and his commitment and the extraordinary work he'd done in what was at the time still a very small school, and it's been a joy to watch it grow and develop to the big numbers that it is today, and also as well as watching the school develop, to watch our friendship develop as well over the 10 years. और भी हमारे साथ मेहमान हैं. सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज फॉरएवर फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है, प्रिंसिपल रफीक सर के बारे में और मिस्टर बैन के बारे में? सो रफीक सर को मैं शायद पर्सनली 8-10 साल से पहचानता हूँ और इनकी स्कूल में आता हूँ. ये हमारे क्लाइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल क्लाइंट है. हम इनकी स्कूल में बुक्स देते हैं, स्कूल बुक्स सप्लाई करते हैं. शायद 15-17 साल से काम करते हैं. 17 साल. और व्हाट आई फाउंड आउट इज़ दैट पहले तो मैं ऐसी कोई मीटिंग में फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ. फॉरएवर फ्रेंडशिप का जो कंसेप्ट है मेरे लिए नया नहीं है, सुना तो बहुत है लेकिन कभी गया नहीं है. और बहुत ही खुश हो रहा हूँ कि कोई अक्रॉस द कॉन्टिनेंट यहाँ आता है और अपनी दोस्ती निभा रहा है. और रफ़ीक सर खुद इतने एक्साइटेड है. और रफ़ीक सर के बारे में कुछ 2 शब्द ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि एक एजुकेशनलिस्ट है, एक परफेक्शनिस्ट है, मैन ऑफ एक्शन एंड वर्ड्स और कमिटमेंट. लेकिन अब मैं आता हूँ इनको मिलने के लिए एज नॉट एज अ क्लाइंट. यहाँ आता हूँ, इनके पास इतना नॉलेज रहता है, इतना शेयर करते हैं, इतनी ओपन बातें करते हैं, जो हम जाके यहाँ से मैं निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि आज मैं कुछ सीख के गया हूँ. सो आई विश ऑल द गुड लक एंड बेस्ट विशेस टू मिस्टर बैन एंड रफ़ीक सर फॉर देयर फ्रेंडशिप. और जो फॉर एवर फ्रेंडशिप है ना, वो राइट वर्ड है. इसके लिए कोई टाइम या कोई जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एक कंसेप्ट है और ये हमेशा ध्यान में रखेंगे तो सबके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है. थैंक यू. थैंक यू. हमारे साथ प्रिंसिपल हुसैन सर है. हुसैन सर, आज जो फ्रेंडशिप डे रखा गया, फॉरएवर फ्रेंडशिप डे, इस सब्जेक्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे और रफ़ीक सर को किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? उनके फॉरेनर फ्रेंड मिस्टर बैन भी साथ में है, बहुत ही खुशी का माहौल दिख रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लोग जो यहाँ मौजूद है और आपके सारे व्यूवर्स को भी मैं हैप्पी फ्रेंडशिप फॉर एवर वाला विश करना चाहता हूँ. और ये जो डे है आज का, मुझे लगता है कि उसको एक ख़ास बनाने के लिए खुद बैन ऑल द वे, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट डे है ये, कि बैन खुद यूके से फ़्लाइट लेकर अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँचे और वो जस्ट आफ्टर पहुँचने के बाद वो सीधा इस वेन्यू पे आए. तो इतना एक्साइटमेंट और मुझे लगता है इतना रिस्पेक्ट जो बैन करते हैं सोसाइटी को, रफ़ीक सर को, मुझे तो काफ़ी सराहनीय है. और इस तरीके की फ्रेंडशिप्स हमेशा आगे भी होती रहती है. हर लाइफ के अंदर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कभी कभी मिलते हैं और कभी कभी बातें होती, पर ज़िंदगी में उनका होना बहुत ज़रूरी होता है. बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने. एक वर्ड मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा. अगर आप हुसैन सर के बारे में बोलना चाहूँगा कि कई बार हमें लगता है कि हम उम्र के उस दौर पे बैठे हुए हैं, उस हाइट पे बैठे हुए हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, हमने बहुत कुछ जान लिया है. लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कई बार हुसैन सर की उम्र के अंदर भी आपके पास उस लेवल की मैच्योरिटी हो सकती है, उस लेवल का कंपोजर हो सकता है जो कई बार मिडिल एज में भी नहीं रहता है लोगों के पास. तो मैंने पर्सनली हुसैन सर से ये सीखा है कि 4 बातें मैं लाइफ में फॉलो करने लगा हूँ. मतलब उसमें से 2 बातें हुसैन सर की है. हमारे वालिद साहब बोलते थे कि कामयाब होने के लिए बहुत सारा पैसा होना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 4 बातों पर गौर करेंगे तो कामयाबी डेफिनेटली आपके पास आएगी. एक तो बहुत ही ठंडा दिमाग, बहुत ही मीठी ज़ुबान, बहुत ही नरम दिल, और चौथा जो मैंने सीखा है वो हुसैन सर से सीखा है. मतलब तीसरा और चौथा वाला है कि हाथ साफ़ होना चाहिए आपका, मतलब लेन देन में आप अच्छे होने चाहिए. ये 4 चीज़ अगर आपने अपने अंदर ले लिया, चाहे आप फिर आप जो कारोबार कर रहे हो, जो बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो बेसिकली आप स्ट्रगल नहीं करते हैं उसके अंदर. तो हुसैन सर का जितनी बार भी मुझे मौका मिलेगा मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा. क्योंकि अगर मुझे रात को 12 बजे कोई चीज़ तकलीफ़ देती है और 3 लोगों का नाम अगर मेरे जहन में आता है कि जिनको मैं कॉल करके मेरी तकलीफ़ शेयर कर सकता हूँ और दूर कर सकता हूँ, तो वो टॉप में सबसे नंबर 1 हुसैन सर का है. सर, आखिर में अपने स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं और आपके जो स्पेशल फ्रेंड्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? मैं यही कहना चाहूँगा कि रिश्ते जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो खूनी रिश्ते हो या मतलब रिलेशन वाले रिश्ते हो.
और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ता है आपको। जैसा अगर जंगल जो है वो अपने आप उग जाएगा, लेकिन बाग अपने आप नहीं उगने वाला है। बाग की आपको हिफाजत करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी, और अगर आपने बंगला बनाया उसकी देखभाल नहीं करे तो वो खंडर बन जाएगा। तो रिश्तों में आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कई बार हम वो नहीं कर पाते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमें लगता है कि 17 साल से हमारे ताल्लुकात हैं तो वो हमें मना कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और जितने भी नए दोस्त आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, जो पुराने हैं वो आपके साथ में उस टाइम पर खड़े थे जब आपके बाजू में कोई खड़े नहीं होता था, तो उनकी अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्त बहुत बनाइए मतलब, लेकिन जो पुराने उनकी कीमत रखना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। थैंक यू वेरी मच सर। When I count my blessings in life, and the number of blessings that I have, I count so many friends a multiple number of times. Ben happens to be that one particular friend. We struck straight away, and it was coincidence, a wonderful coincidence to meet Ben through a common friend, as we all are mentioning now. So Ben has always been a pillar of success for me because he insists on collaborating with people. And if there has to be a prize for listing schools under certain categories, I think Srinivas would agree over here with me. Holy Mother happens to be the most collaborative school among many schools that stand in Malvani, of course. And we feel, it takes an entire village to raise one particular child. And if you have to design destinies of 1,000 plus students, the might of management alone will never ever be sufficient. You need more heads to think about the children. You need more hearts to beat for the children. You need more hands to come and do that work. For me, I think I do the least number of work in my school. 20% of what has happened in this school goes to me. I take that credit every single day. 80% of that happens because of the teachers, because of the well-wishers, because of the partners, because of the contacts, because of the connection, because of the community. So I can never ever claim my percentage in that particular part. So I'm blessed multiple number of times, and so many people sitting around here has contributed immensely in making Holy Mother what it is today. And Harin said sitting over here, many times I have told my parents, the credit system that we offer at our schools and at Holy Mother, Holy Star and all the mom schools is because of vendors, because of partners like Sale Publication. They provide us book, they provide us concession, and they give us 1 year's time, which is awesome. The parents feel that Holy Mother provides us book, takes money in 1 year's time. That cannot actually happen without Harin Seth standing behind us. And that has happened for 17 years in my school. And hopefully I see it's going to continue for another 70 years for our schools to stand tall and deliver what it does. So all the friends, all the relatives who have come over here, last over there, I think Kaisar Bhai is there, Maqsood Bhai is there, Sachin Bhai, who works so well for our school, designing so many things over there. The people who have come from the media, the journalists, Pandey ji, Srinivasan, हमारे भाई यहाँ बैठे जिशान जी, ये सब लोग मिलकर हमारे स्कूलों के बारे में बात करते हैं। कई बार हमारे स्कूल में बहुत सी खामियां ऐसी होती जो हम नहीं देख पाते हैं। जब हम छत पे जाते हैं तो आपका बेडरूम दिखना बंद हो जाता है। तो मेरी ऑफिस से कैमरा 32 लगे होने के बावजूद भी बहुत से फाइनल एलिमेंट्स मैं नहीं देख पाता हूँ। तो जो मीडिया है वो आके हमें आईना दिखाता है, वो हमें बोलता है कि सर ये वाला नहीं सही जा रहा है आपका, सर ये कंप्लेंट आ रहा है आपका। सो वी टेक दैट एज कॉम्प्लीमेंट, वी वर्क ऑन दैट, go back and then he will open over there. The unboxing part will happen in UK and he will send me the video, I think. So we have just collected the first gift that he's having is the dress that he's wearing, and he looks a super cool model for modeling the best outfits, I think. So we are not counting that as one. This is one. The first gift from mom schools and from India. Headmaster at Holy Star to share a few words with us. I think Give him a round of applause. hello. Very good evening to all. I think so. It's an always privilege to come to Holy Mother and like to have a meeting with Rafiq Sir. I think always as a mom when we started, like initially it was a thought process when it's been generated in a car, where we thought that when we are coming out of from our struggle for getting the recognition. So during that time Rafiq Sir suggested why we cannot like make a board where all the unauthorized schools or recognized schools can come on the board and we can like try to find out the solutions for them. What solutions we have found.
So I think that's a small communication during the time going towards Rasi. I think so that has created a history in Malvani. The best part is that during the time of pandemic, a small communication had between I and Rafiq Sir was that sir, though we have a good communication, sir, Rafiq Sir has a good connections too. So why we cannot use these connections to benefit the student and the parents staying in the community and the parents of our school. I think that day Rafiq Sir ने बोला हाँ चलो we will think of it, and हमने फिर छोटा सा we have started a small drive, and I think so in the whole Mumbai, or I think so in the whole India, I think so MOM was the first organization to start the ration distribution, and I think so it has been started from a small packet, but later on when what we have seen, like all the MOM schools got so excited and so energetic, they actually started like finding their own connections. They started doing drives, rationing drives have been started. Other than that, I think so lots of priceless thing has came to us, like getting Teach for India in the schools, like which is one of the leading organization working in education sector, which has been like Rafiq Sir has teach them कि sir ऐसे और भी schools है, like those who are working very well in the community, they need such kind of support and exposure. So I think so Rafiq Sir was the one who brought Teach for India to maximum schools of Mali. So I think that was one of the good initiatives. Later on, actually, experimental has been done by Teach for India by bringing ASL, Assistant School Leader, where a fellow who has completed 2 years of his or her fellowship, like she has got a training to run the organization, has been came and worked with the schools, and like that was also very impactful thought. I think so we have used, and I think getting recognition is one of the difficult and challenging thing as a schools are facing, because department चाहता है school बंद कर दो, और अब उस कोशिश करते कि मेरा नाम बचा रहा है मैं स्कूल चला लूँ. तो that is one of the difficult part. I think so जो MOM has an board we have used as a tool, and हमने बहुत अच्छे से उस जर्नी को ट्रैवल किया है, and I think so in the coming जर्नीज में और ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन्स है. आई थिंक सो मॉम एंड एज एन ग्रुप हम अचीव कर पाएंगे. आई रियली वांट टू अप्रिशिएट बैन. जब इनिशियली लाइक वी हैड अ कम्युनिकेशन मीटिंग विथ हिम, so we were very hopeful. So I think we were having very challenging situation to having a washroom for the kids. So we were just in the process of actually building some washrooms to the classroom for the students. That time Ben has a visit to the school, and it was a big support that he has donated a few things to the school, which actually helped by providing the basic facilities to the school. So thank you Ben for the wonderful support you have done for us. Once again, like it's a teachers who run the shows. Basically हम credit ले जाते हैं हमेशा, because हम stage पर होते हैं. But you are the one actually who are actually working very beautifully. मुझे लगता है बिना आपके हम एक्चुअल में अधूरे और आधे हैं पूरे के पूरे. एंड आई थिंक कि सर अपनी जबान को बहुत मीठी और दिमाग को बहुत ठंडा रखना पड़ता है. बट आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल इस फॉर्मूले को कोई यूज़ करता तो वो टीचर्स होती. बीइंग वर्किंग इन 100 स्टूडेंट्स विद अ लॉट ऑफ एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के इश्यूज, फैन के इश्यूज. आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्कूल. तो स्टिल एक्चुअली टीचर्स आर परफॉर्मिंग वेल. एंड आई थिंक ऑल द teachers, those who are working in all MOM school or even in the other schools in Malvani, मुझे तो challenging conditions में all teachers are doing very wonderful. Refined personality. So I now invite Ms. Swati, Headmistress at Chhatrapati Shivaji Vidyalaya, to come and speak a few words with us. Thank you so much. Good evening, everyone. I'm so sorry. First of all, I got little late. Not little late. I got actually 1 hour late, but I got stuck in the traffic all the way. I'm coming from Sion. So. To start with our friendship, मैं रफ़ीक सर से एक प्रिंसिपल्स के मीटिंग में मिली थी. जब मैंने वहाँ पे सर का स्पीच सुना, जब कॉन्वर्सेशन सुना बाकी टीचर्स के साथ, दैट टाइम आई गॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड. एंड वहाँ से हमारा एक्चुअली फॉर्मल फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गया था. बट कोविड के दरमियान, during COVID time, we got very close friends. We tried shared best practices with each other. Even हुसैन सर, मोहसिन सर, सब ग्रुप के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था मेरा. दो आई एम वेरी फार फ्रॉम देम, बट कुछ भी अच्छा प्रैक्टिस आता है, कुछ भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज आता है, रफ़ीक सर नेवर फॉरगेट्स अबाउट माय स्कूल. सो थैंक यू रफ़ीक सर. एंड आई विल विश कि हमारा ये फ्रेंडशिप ऐसे ही लॉन्ग लास्टिंग है. थैंक यू सो मच. हाँ नहीं कर या बेटा
It's friends forever. Slow is best. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here this evening with you all. I must thank our two beautiful hosts. Thank you for making me feel so welcome and for leading our ceremony today. I'd like to say how nice it is to see some old friends, not quite 10 years, but Hussein Sir, Mohsen Sir, Tariq Sir, Mr. Haroon, lovely to see you again after too long during COVID. Very good to see you. And to the teachers of HMES, thank you for all that you do in your hard work for the children, day after day, coming to work in hard conditions, I know, and I am very proud to be associated with the work that you do. So thank you very much to all of you. But we're here today to just talk about friendship, a friendship for 10 years with Rafiq. Believe it or not, it is 10 years today, this very day, 10 years since I first met Rafiq at Holy Mother School, and I can honestly say that I had no idea that in 10 years' time I would be standing here. So, if I may, I have written a letter to Rafiq, which I would like to share with you all as I give it to him. Would that be okay? Yes. Okay. So, I'll read it slowly, and it won't take too long though. I hope this is okay. So, to my dear Rafiq, on this most extraordinary of days, when we celebrate what must surely be the most unexpected and unlikely of friendships, I thought I would take a moment to share my thoughts. I could not have imagined 10 years ago that setting foot in your most incredible school would be the first step on a journey that would lead us to this point. I still remember so clearly meeting you for the first time. I remember the sights and sounds of Malmany. I remember listening to you speak, and I remember listening to others speak of you. I remember seeing your work, meeting your wonderful staff, and your wonderful children. More than anything though, I remember being so moved by your work. I had expected an interesting visit, but what I found of passion and of devotion to the cause of underprivileged children. What I also discovered that day was the beginning of a friendship which over the course of a decade has grown, has developed and become stronger. My friend, we have both been through ups and downs in our work together. There have been highs and there have been lows. We have shared extraordinary successes. We've built new buildings. We have brought headmasters together. We've had visitors from the UK. And we've even had trips to the Persian Gulf. Yes. We've also endured trials. The trials of COVID, some unexpected setbacks, and indeed our own personal changes and challenges. But throughout the last 10 years, our friendship has been a constant. It has not always been an everyday thing, but it has always been consistent and dependable and comforting and a motivating presence in my life. And I can say with complete conviction that I have never experienced a friendship quite like this. A friendship so unexpected, a friendship so surprising, and yet so warm and so supportive. A wise man said once that some people
arrive and make such an impact in your life that you can hardly remember what life was like before them. And Rafiq Sir, this is how I feel about you. You are a leader, a motivator, an orator, you are a guide and a visionary, and you are a man that other people wish to follow. In short, you are an inspiration. Above all though, and above everything else, you are my friend, and I will be eternally grateful for the events that brought us together all those years ago. Thank you. This first gift is from my children actually. My children are big now, they are 19, but they have made a gift for Rafiq, which I would like him to open now, if that's okay with you. Thank you. Thank you. हम ऐसा